what's up you guys? Welcome back to my channel. I'm Rumela and in today's video I am going to eat only momos for 24 hours. यही challenge है and I don't think it's a challenge because honestly I love momos but इसमें से एक भी plain momos नहीं है, okay? I've added a twist to it and I am going to try 5 different types of momos, 5 different recipes and इसमें से जो first recipe है वही मैंने internet से उठाया हुआ है और YouTube पे I found that recipe. It's a momo soup because early morning में एकदम ऐसे मसाले वाला मोमोज खाने का मन नहीं है तो it's a momo soup, but all of the other recipes are something that I make myself and I don't think you guys will find those recipes anywhere on the internet. ये एकदम से fusion recipe है जो हम लोग घर पे ही बनाते हैं and all of those, okay, you guys will see that but I'm super excited to share all of these recipes with you guys. बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में. I'm super excited and it's breakfast time so I am going to make momos soup for breakfast क्योंकि सुबह ऐसे you know मसालेदार खाने का मन नहीं है, एकदम कुछ वार्म पीने का मन है because it's kind of chilly as well. Soup momos बनाने वाली हूँ and it is mokthuk. I don't know if I'm pronouncing it right but it's called muktuk and it is a Tibetan soup momos. So breakfast में मैं वो बनाने जाने वाली हूँ. So yeah, I am super excited. Let's go and see how to make it. So that is just me trying to show off that I made the momos when in reality mom and nani made the momos. I just made a few of them. So ये momo maker में dough रख दिया and then I added the filling and then pressed and then beautiful momos are ready. You can get this on Amazon. The first recipe is mokthuk aka momo soup. So for that you need to take a pan, add in some oil and then add in some crushed ginger and garlic. Make sure you add lots of it and then some onions. Fry the onions and then add in tomato and then let these veggies saute really well in the oil. And then I'm going to add in some salt and some pepper and also 1 chicken cube. You can also use meat cube here or you can use actual chicken or meat bones. And then I'm trying to get oyster sauce out of the bottle but I just couldn't and then finally I did. So I'm just going to add 1.5 teaspoons of oyster sauce. This makes all of the difference and it elevates the taste a lot. So oyster sauce is a must for this recipe. And then I'm just going to add in 1.5 cups of water and let this boil really well. And once the water has boiled, I'm just going to add in the momos and let that boil for 2 to 3 minutes. Make sure you don't overboil the momos and make sure they're perfectly cooked because पानी में रह के वो और ज़्यादा cook हो जाते. तो मेरा थोड़ा overcook हो गया था by the end of the day. And then I'm just going to add in some spinach and some dark soy sauce and that is it. Okay, so the momo soup is ready and I am super excited to try it. Oh wow. This is very comforting. एकदम चिकन सूप जैसे. अगर एक्चुअल में सूप में भी चिकन के बोन सब डालोगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट मतलब अच्छा होगा. I added the stock, that's why it tastes really good and I really love it यार. सूप बहुत ज़्यादा अच्छा है. I'll try it with the momo. It's delicious, okay. बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. If you are someone who loves soup and also momos then you're going to love this recipe, okay. I am someone who loves soup and momos तो दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड ऑल्सो द सूप इज़ वेरी लाइट वेट, एकदम पानी जैसे, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग, ऐसे हैवी नहीं है. तो आई थिंक इट्स गुड फॉर मॉर्निंग एज वेल. ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, थोड़ा सा पेपर डाला है बस. एंड इट्स क्वाइट हेल्दी एक्चुअली क्योंकि सब कुछ बॉयल किया हुआ है. देयर स्पिनिच एंड देन देयर मोमोज एंड यू नो जस्ट द चिकन सूप भी बहुत अच्छा है. अगर स्टॉक की जगह पे एक्चुअल बोन्स भी डालोगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा बट आई डिडंट हैव दैट सो मैंने चिकन स्टॉक डाला. बट एनी वे आई एब्सोल्युटली लव दिस रेसिपी. यू गाइस शुड डेफिनेटली ट्राई इट. आई वुड रेट दिस लाइक a 9 out of 10 and it's a big thumbs up from my side.
This next recipe is the thele wala Chinese gravy momos. Now this Chinese gravy is something that we make a lot, and for this recipe you need to fry momos. You can use steamed momos as well, but I thought that fried momos would go really well with the Chinese sauce, and that is why I fried some momos. And for the sauce you need to heat a pan and then add in lots and lots of garlic and some chilies as well, and make sure these fry really well in the oil until they turn golden brown. Then add in a little bit of onions and also some veggies. So I added some carrot and cabbage and then sauteed all of those really well. I couldn't find the footage of the carrot and cabbage, I think I lost it, but I did saute all of the veggies really well in oil. And while the veggies are frying, let's make the sauce mixture. For that I'm going to add in 2 to 3 teaspoons of ketchup, 2 teaspoons of red chili sauce, 1 teaspoon of green chili sauce, 2 teaspoons of vinegar, some sugar, and a little bit of Ajinomoto as well, but Ajinomoto is optional of course. I also added in a little bit more of tomato sauce, and then dark soy sauce, of course, how can you forget dark soy sauce. And once the veggies have sauteed really well on high heat, I'm going to add in the Szechuan sauce directly to the veggies, because I want the Szechuan sauce to fry in oil and not mix with the other sauces first. So once the Szechuan sauce was fried really well in oil, and once you can smell the flavor of the Szechuan sauce, it's time to add in the sauce mixture that we made, and then again mix this really well and fry this on medium heat for around 30 seconds to a minute until they fry really well. And then I'm going to add a little bit of corn flour slurry and then some water as well to make this gravy like, and that is it. It's a very very easy gravy recipe. I also added a little bit more soy sauce, and then I added some chili powder that I fried in oil for that beautiful red color as well, since I didn't want to add any red food color. And then I added some pepper for spiciness, and then I just added the fried momos to the sauce and tossed it really well in the sauce, cooked it for like 30 seconds, and the beautiful Chinese momo is ready. Okay, so it is the afternoon and time to taste test my Chinese momos. Inaya is playing in the room, so that is why the sound, and I'm super excited to try this. ये जो Chinese sauce है ये मेरा favorite है. We use this to make noodles all the time, और मैगी भी डालते हैं इसमें, मतलब ये sauce बना के. But momos तो पहली बार ही try कर रहे हैं. So I want to try the sauce first. Wow. Mana ini actor? Bah. Bah. I want to try the momo as well. वाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा है. दिस इज़ इवन बेटर देन द फर्स्ट वन. वाओ, आई लव दिस. मुझे ये सॉस बहुत पसंद है. ये जो नूडल्स हम लोग बनाते हैं ये बहुत स्लिपरी है, इसलिए ये जो नूडल्स हम बनाते हैं वो नूडल्स ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड विथ फ्राइड मोमोज दिस इज़ अमेजिंग. ओके, दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑनेस्टली, फ्राइड मोमोज और चाइनीज़ का सॉस. नहीं तो भी व्हेन आई गो आउट आई ऑलवेज हैव चिली गार्लिक मोमोज, वो भी मुझे बहुत पसंद है. बट ये भी बहुत अच्छा है. इफ़ यू आर एट होम, ये तो ईजिली घर पे भी बना सकते हैं क्योंकि सब सॉसेस तो घर पे अवेलेबल रहता ही है. आई एब्सोल्युटली लव दिस. इफ़ यू आर अ चाइनीज़ फूड लवर यू लव दिस. इवन इफ़ यू आर नॉट अ चाइनीज़ फूड लवर यू आर गोइंग टू लव दिस. बहुत ज़्यादा अच्छा है. दिस इज़ टू गुड. टेन ऑन टेन. दिस रेसिपी इज़ 10 on 10. इसमें कुछ भी मुझे मतलब ऐसे फील ही नहीं हो रहा है कि एक भी पॉइंट में इसको कम दूँ. यू आई शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. नया टेस्ट. दैट मीन्स यम्मी. उसको भी पसंद आ गया. सो दिस रेसिपी इज़ डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई. Moving on, the next recipe that I'm going to make is white sauce momos. You guys know how easy white sauce is, right? You just need to add some butter, and once the butter melts, add in lots and lots of garlic. I absolutely love the flavor of garlic, and that's why I add lots of garlic in all of
in whatever I make. But all of these recipes do call for, lots of garlic. And then I'm just going to add in a 1 teaspoon of all-purpose flour or maida, and then I'm just going to add in some milk. Now, while you're adding the milk, make sure you add it little by little and don't pour all of it at once, because then the mixture will be clumpy and you won't be able to mix it really well. And then add some grated cheese and mix really well, and that is it. Your white sauce pasta is ready. You obviously need to add some seasoning, so I'm going to add some salt, pepper, and some pasta seasoning, and also some chili flakes. And then I'm just going to add in the momos. I'm going to switch off the flame, dip the momos in the sauce really well, and then cover and let it sit in the sauce for a few minutes so that it soaks up all of the beautiful flavors. Okay, so it is the evening right now and I made some white sauce momos and it's finally time to taste. I'm super nervous क्योंकि मुझे white sauce pasta बहुत ज़्यादा पसंद था. ओके, पहले इतना ज़्यादा पसंद था कि I used to eat it all the time. And then what happened was, कोई भी आता था घर पे आई टू मेक वाइट सॉस पास्ता, मैं कहीं भी जाती आई टू मेक वाइट सॉस पास्ता. इतना वाइट सॉस पास्ता खा खा के मुझे बहुत ही गंदा फील होने लगा. एंड नाउ आई डोंट लाइक वाइट सॉस पास्ता. कभी कभी खा लिया तो मतलब कभी तो खा लिया तो इट्स ओके, बट आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट. ऑनेस्टली आई डोंट इवन लाइक इट दैट मच. मैं बाहर भी जाती हूँ तो वाइट सॉस पास्ता कभी नहीं लेती हूँ. इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years now I guess since I've had white sauce pasta, और अभी भी मुझे मन नहीं करता है क्योंकि पता नहीं इतना खा खा के वो मन उड़ जाता है ना, वैसे हो गया था. So that was my story of the white sauce. That's why I'm nervous to test it क्योंकि पता नहीं मुझे पसंद आएगा या नहीं, but let's see. फ़ोटो लेते लेते थोड़ा ठंडा हो गया. इट्स एग्जैक्टली लाइक वाइट सॉस पास्ता क्योंकि मैदा ही है. अभी तो मैंने मसाला खाया नहीं है, बट विद द मैदा एंड विद द सॉस दिस इज़ टेस्टिंग लाइक वाइट सॉस पास्ता. मतलब पास्ता जैसे ही टेस्ट आ रहा है. ऑनेस्टली दिस इज़ बेटर देन वाइट सॉस पास्ता क्योंकि पास्ता में तो सिर्फ मैदा होता है. इसमें वो चिकन का फिलिंग भी बहुत यम है. चिकन का फिलिंग भी घर पे बनाया, मॉम ने बनाया, ऑफकोर्स मैंने नहीं बनाया, बट माई मदर मेक्स रियली यम मोमोज का फिलिंग, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एंड सरप्राइजिंगली वाइट सॉस और मोमोज बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे. तो आई लाइक इट ओनली बिकॉज मुझे वाइट सॉस से थोड़ा सा वाला रिलेशनशिप है वाइट सॉस के साथ. आई वुडेंट गिव दिस लाइक अ 10 on 10, इट वुड बी लाइक एन 8 on 10. But if you are someone who loves white sauce, then you will love this. If you're someone who loves white sauce pasta या mac and cheese भी तुमको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो you love this. तो combination is great. मुझे लगा नहीं था ये दोनों जाएगा क्योंकि मोमोज में चाइनीज़ वाला मसाला होता है थोड़ा, and white sauce is Italian. But the fusion is good. Okay, it's good. The white sauce is also not bad. काफ़ी टाइम हो गया मुझे खा के, इसलिए अब मुझे इतना भी मतलब गंदा नहीं लग रहा है. बट बीच में तो आई कम्प्लीटली स्टॉप ईटिंग वाइट सॉस पास्ता. The next recipe that I'm going to try is Gochujang Momos. I was super excited for this one, and honestly this is the quickest and the easiest out of all the recipes that I've shown in today's video. You just need to heat some oil and then add lots of garlic. Now this recipe does call for a lot of garlic because garlic does add a lot of flavor to this. इसमें ज़्यादा और कुछ डलता नहीं है. So make sure you fry the garlic in oil for at least 30 seconds to a minute until the raw flavor completely disappears, and then you need to add 1.5 teaspoons of gochujang paste. This is easily available on Amazon. You can get this on Amazon. बहुत ही अच्छा flavor है इसका. You guys have to try gochujang. And then you just need to fry this gochujang paste in the oil for a minute. Make sure you do this on low heat so that you don't burn the gochujang paste since it is made of chilies. And then what you have to do is just add in some fresh cream. Now I am going to just eyeball the measurement, but roughly around 4 to 5 tablespoons of
fresh cream would be great. And then to make this a little bit more gravy like, I'm going to add in 1 small cup of milk, and that is it. Mix really well and your gochujang sauce is ready. You don't need to add any seasonings to this because the gochujang paste is very flavorful on its own. You don't even need to add salt. Just gochujang paste. Make sure you fry the gochujang paste really well in oil so that the flavors come out beautifully. And then you just need to add in the momos and mix it really well in the sauce and cover and let it sit in the sauce for 5 minutes, and your gochujang momos is ready. I also sprinkled a little bit of black sesame seeds on top of it because what is Korean food without some sesame seeds? So time to taste test the gochujang momos. I'm super excited about this one. इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा excitement था. कल से ही मैं gochujang momos कैसे होगा सोच के सो ही नहीं पाई ठीक से. And मेरा अवतार थोड़ा I look a little tired. I know पूरा दिन मोमोज बनाते थक गई हूँ. Honestly, food challenges आर वेरी चैलेंजिंग. मतलब बनाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खाना बिल्कुल भी चैलेंज नहीं होता है मेरे लिए. तो आई थिंक आई टोल्ड दिस इन माई प्रीवियस वीडियो एज वेल. आई गेट सो टायर्ड पूरा दिन बनाते. बट ऑल ऑफ दैट असाइड, आई एम सुपर एक्साइटेड ट्राई दिस वन. कैसे होगा देखते हैं. आई डिड ट्राई द सॉस थोड़ा सा, मतलब टेस्ट करने के लिए कि सब कुछ है क्या, बट ऐसे खाया तो नहीं है. बनाते आई डिड ट्राई द सॉस अ लिटिल बिट. So I am going to take my first bite. Wow. This is one of the easiest and the yummiest momos ever. Honestly, इसमें कुछ डाला ही नहीं है मैंने. सिर्फ गार्लिक डाला, गोचुजंग पेस्ट, क्रीम एंड मिल्क, उतना डाल के बस मिक्स करके मोमोज डाल दिया उसमें. दिस इज़ सीरियसली टू गुड. ओके, इसमें तो बिल्कुल काम भी नहीं लगा था. वाओ. I would honestly give this a 10 on 10. 10 on 10 from my side. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. If you are someone who likes Korean food, Korean taste तुमको पसंद है, गोचुजंग का टेस्ट पसंद है, तुमने पहले कभी खाया होगा तो you'll know. बट नहीं तो भी I think even if you haven't tried Korean or gochujang ever, you'll still like this because इसमें बुरा लगने के लिए कुछ है ही नहीं. इट्स वेरी यूनिक. ओके, आई कांट इवन एक्सप्लेन द फ्लेवर, बट इट्स नॉट वेरी स्पाइसी. इट्स अ लिटिल स्पाइसी, इट्स अ लिटिल स्मोकी वाला फ्लेवर आ रहा है एंड थोड़ा सा स्पाइसी है, बट द क्रीम एंड द मिल्क बैलेंसेस ऑल ऑफ इट एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. इसमें तो सॉल्ट भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज गोचुजंग पेस्ट में सब कुछ होता है एंड सिर्फ क्रीम डाल के उसको बैलेंस करना होता है. वो ऑन इट्स ओन इट्स क्वाइट स्पाइसी एंड स्मोकी वाला फ्लेवर रहता है. क्रीम डाल के मैंने बैलेंस किया एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस. दिस इज़ माई फेवरेट. ओके, दिस इज़ माई फेवरेट. जो लास्ट मोमो रेसिपी है वो चॉकलेट है, वो तो अभी मैंने ट्राई नहीं किया है तो पता नहीं, बट अभी तक का ये मेरा फेवरेट है. दिस इज़ द फर्स्ट. सेकेंड वुड बी द चाइनीज़, देन वुड बी द सूप एंड देन वुड बी द वाइट सॉस. ओके, आई लव दिस. Coming to the last and final recipe of today's video, it is the chocolate momos. इसमें मैं chicken momos नहीं use करने वाली of course. So I want to show you guys how to make the actual momo. I just added in some grated dark chocolate and then pressed it in the momo maker and just made a few of these chocolate momos. And then I took a little over 100 grams of dark chocolate and around 55 grams of heavy whipping cream. You can also use Amul ka fresh cream instead, but you need to use half of the chocolate. And I'm just going to heat the whipping cream for a little bit. Don't boil it, just heat it a little bit until bubbles appear on the side, and then I'm just going to pour the whipping cream into the chopped dark chocolate and let it sit for a few minutes, and that will melt the chocolate. And then I'm just going to mix all of it really well. My cream wasn't warm enough, so I microwaved this mixture for another 30 seconds and then got a beautiful ganache, a very silky smooth ganache. And then
then I'm just going to top the ganache over the chocolate momos. Now one thing I wanted to change here is I added only a little bit of the ganache. So if you are making chocolate momos, make sure you add lots of ganache or add some milk and make it a little liquidy, and then pour the ganache over the momos. So it's time to taste test the chocolate momos. I'm super excited. I know I'm saying this for every momo, but सब कुछ आज इतना different है जो पहले कभी खाया नहीं है. So I'm super excited to try this. I've never had chocolate momos. Okay, मैं बाहर जब जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ खाऊंगी but कभी खाया नहीं है मैंने. So I'm super excited to try this. Also, when you're making chocolate momos, make sure your momos are steaming hot और एकदम गरम गरम गनाश ऊपर से डाल दो तो बहुत अच्छा लगेगा. मेरा तो थोड़ा ठंडा हो गया है बिकॉज फ़ोटो निकालते निकालते शूट करते करते ठंडा हो जाता है. बट स्टिल आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट इट. इट्स गुड. गनाश थोड़ा और डालना चाहिए था. तो इफ़ यू प्लान टू मेक दिस, एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर से गनाश डाल दो, एकदम पोर कर दो गनाश. मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है ऐसे. बट द फ्लेवर इज़ रियली गुड. ओके, द फ्लेवर इज़ रियली रियली गुड, बट थोड़ा सा ड्राई लग रहा है मुझे. एंड दैट कुड बी बिकॉज ऑफ कोर्स गनाश ऊपर से कम डाला है. तो एकदम भर भर के गनाश डाल दो तो अच्छा लगेगा. यू कैन ऑल्सो ट्राई चॉकलेट सिरप, बट वो आई ऑनेस्टली डोंट लाइक द चॉकलेट टेस्ट ऑफ चॉकलेट सिरप. एकदम स्वीट पानी जैसे लगता है. चॉकलेट का फ्लेवर तो बिल्कुल भी नहीं आता है उसमें, तो मुझे नहीं पसंद. कोको पाउडर का टेस्ट आता है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. ओके, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेक चॉकलेट मोमोज. अंदर चॉकलेट फिल कर दो, ऊपर से चॉकलेट गनाश डाल दो, एंड इट्स गुड. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ट्राइंग दिस रेसिपी. बट द ओनली थिंग इज़ ज़्यादा गनाश डालो ऊपर से. इट शुड बी जूसी. ये वाला थोड़ा सा ड्राई. So that is all I had for today's video. ये रेसिपी के लिए भी I'll give a 9 out of 10. If I had put a lot of ganache एकदम juicy होता तो I'd give a 10 on 10. But never mind. It's a 9 on 10 and I absolutely love this. I would definitely recreate all of the recipes आज के वीडियो में से, except the white sauce pasta वाला रेसिपी. मुझे पसंद है but पता नहीं white sauce you guys know right, white sauce से मेरा थोड़ा टेढ़ा रिश्ता है. तो वाइट सॉस छोड़ के आई वुड डेफिनेटली मेक ऑल ऑफ द मोमोज. आई एब्सोल्युटली लव इट. और बहुत ही मज़ा आया यार अलग अलग मोमोज का खा के. हमेशा मैं स्टीम मोमोज ही खाती हूँ. आई डोंट इवन लाइक इतना फ्राइड मोमोज. स्टीम मोमोज ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और आज अलग अलग वैराइटीज़ खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया. So that is it for the video guys. I hope you guys enjoyed the video. I had so much fun shooting this video. बहुत लग भी गई है. I'm so tired right now बनाते बनाते. Actually बनाना is quite easy, but shoot करना और बनाना, हर एंगल से शूट करना, ये करना वो करना और बनाना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है at some point, and I'm super tired today. But I really enjoyed it. It was worth every effort that I put क्योंकि इतना अच्छा खाने मिला और इतना अच्छा वीडियो मिला. So I hope you guys enjoyed the video. If you try any of these recipes, do let me know in the comments down below. If you like the video, don't forget to give it a big fat thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't already. I'll see you guys super soon in another video. Until then, bye bye.